Hi, this is Suraj, and we are starting with 2IQ series. Here I will bring as many as PYQ, starting with polity very first. तो यहाँ मैं सिर्फ 10 से 15 PYQ लेकर आया हूँ एंड हम लोग इसे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन एंड साइमल्टेनियसली गिव आंसर एंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा. दिस विल हेल्प यू वेरी मच फॉर प्रीलिम्स, अपकमिंग प्रीलिम्स, जैसे कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो या ऑल वेदर यूपीएससी हो या अपकमिंग बिहार में का एडीयू एग्जाम हो, एसएससी हो. सो दिस सीरीज विल हेल्प इमेंसली. सो लेट्स गेट started. Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly? So the answer is B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar थे Constituent Assembly के draft chairman of drafting committee. How many members of the Constituent Assembly signed the Constitution of India? So answer is 284. Third question, the permanent president of Constituent Assembly was, तो कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. चौथा है, who among the following was non-Congress member of the Constituent Assembly? तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर. ये एक नया क्वेश्चन मुझे लगा, सो मैं इसे डबल इंपॉर्टेंट मानता हूँ. कौन थे? Who among the following was non-Congress member of the Constituent Assembly? B.R. Ambedkar. How many members were assigned by cabinet mission in Constituent Assembly? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, 296 member assigned by cabinet mission in Constituent Assembly. The mission consisted of Lord Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander. 6. What was the duration of making of Indian Constitution? तो इसका आंसर होगा सी, 2, 11, 18. Which of the following gave the idea of Constituent Assembly? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by, तो इसका आंसर होगा President of India. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by President of India and came into force on 26 January 1950. When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? तो इसका आंसर होगा सी, 9th of December 1946. Coming to 10th question, the Constitution of India was completed by which of the following date? किस तारीख तक ये बनकर रेडी हो गया? तो 26 November 1949. The proposal for framing of Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by, तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन. The proposal for framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by the British cabinet delegation. So ये भी मुझे नया क्वेश्चन लगा. Second, who of the following has stated that the Constitution has not been set in right model of federalism? इनमें से किसने कहा? डी बासु, के मुंशी. तो इसका राइट आंसर होगा ए के अय्यर. Who of the following moved the objective resolution? ये सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू. 14 का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा 7. 15, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था? तो इसका आंसर होगा सर बी एन राव, एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. Consider the following statement regarding the composition of Constituent Assembly. First statement, the representative were to be elected from the 4 constituency, Hindu, Muslim, Sikh and Christian. Second statement, the chairman of Union Constitution Committee was Sardar Vallabhbhai Patel. And third statement, the total strength of Constituent Assembly was 389 and
The drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar consisted of 8 members. तो ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, अभी मैंने बताया ये 7 मेंबर बॉडी था, तो 4 कट जाएगा, तो इसका आंसर है ओनली सी. लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. Seat allocated to each British province were to be decided among the 3 principal communities. 3 थे, वो था मुस्लिम, सिख एंड जनरल. हिंदू जो थे वो जनरल में आते थे इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. तो ये थोड़ा अच्छा फैक्ट हो गया. सेकेंड, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज नॉट सरदार पटेल बट जवाहरलाल नेहरू. यूनियन देखते नेहरू मारना है. And the total strength was 389. This is totally correct. So thank you. I will continue with the series. Stay tuned and thank you.